Hi, all. Welcome and welcome back to Manasiyat. First of all, sit down, get comfortable because I know it was your last exam of CA Foundation today. And first of all, congratulations for killing all the exams in a row. Second of all, sit down and relax for some time, relax for some days because you really need relaxation at this point. Because I myself know, I myself have given my CA foundation exam in September 2025 and I have cleared it and I know उसके बाद ऐसा लगता है कि बस अब तो कोई 3-4 दिन मुझे किताबें देखने को ना बोले, 3-4 दिन कोई किताबें उठाने को ना बोले, भाई मेरा बस हो गया. And now comes the three categories in which you should divide yourself. Category number 1 is that you know you will pass. Category number 2 is that you know you won't pass in your CA foundation January 26th, and category number 3 is that you are doubtful that you will pass or you will not pass. Let's talk about category number 1. If you are from category number 1, you are sure that you will pass your CA foundation January 2026, then I think relax करने के बाद कुछ टाइम अपने लिए निकालने के बाद you should start searching for inter subjects, inter coaching. I mean, you should not start studying for inter, CA inter, but you should start searching about the materials required, the subjects, the coachings. You can take demo lectures and आप subjects के बारे में search कीजिए. Which subject requires most of the efforts? Which subject requires minimal efforts? Which subject will be your strongest in your CA inter? So you can start researching about it. You can start taking demo lectures. The bonus point that the category number 1 will get as compared with others is that कि तुम्हें एक अलग से टाइम मिल जाएगा, एक अलग से टाइमलाइन से मिल जाएगी कि जिस टाइम पे तुम इजीली बैठ के रिसर्च कर सकते हो अपने सब्जेक्ट्स के बारे में, जिस टाइम पे तुम इजीली बैठ के रिसर्च कर सकते हो डेमो लेक्चर्स के बारे में. मतलब तुम्हें एक अलग सी एडवांटेज मिल जाएगी बाकी कैटेगरीज के ऊपर बिकॉज यू विल हैव दैट टाइम टिल दी रिजल्ट की तुम अच्छे से रिसर्चिंग कर सकते हो अपनी सी इंटर के लिए, सो दैट व्हेन द रिजल्ट कम्स you are not fumbling or you're not going here and there for your lectures, for your any registration process or anything. You know beforehand, right? And you should not start studying for CA inter, that I would recommend. Rather you should start researching for all the miscellaneous questions जिनके बारे में मैंने रिसर्च तब शुरू करी थी जब मेरा रिजल्ट आया था. लेट मी टेल यू, my result was announced on November 3, 2025, and it took me a month till December 3, 2025. I rushed for my coaching. मुझे नहीं पता था कि कैसे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता था. आई वाज रोमिंग हियर एंड देयर फंबलिंग, क्योंकि ऐसे मैं जेन्युइनली बताती हूँ, जितने लोगों से आप पूछोगे ना उतना ज़्यादा आप और ज़्यादा परेशान होते हो, आपको और ज़्यादा मिस्ड अप होते हो, समझ में नहीं आता है कि क्या करना है. द मोर यूट्यूब वीडियोज़ यू विल वॉच, द मोर you will get confused कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए. So for all that confusion, you have a like quite good amount of time in which you can research whatever you want to research about CA inter. This comes to category number 1. Now we are going to talk about category number 2, which is that you are sure that you won't pass your CA foundation January 2026, right? For that, I will still tell you to take a 1 week break. Take a big 1 week break without the regret that you are not going to pass, without thinking कि मैंने कहाँ गलती कर दी, क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया. It's not the time to think about that. Let me hold your hand while I tell you this. I know you are sure about the fact that you're not going to pass, but your body still needs rest. You have conquered a straight 1 day gap, 4 exams for your CA foundation. That is a competitive exam. And बहुत सारे बच्चे फेल होते हैं. एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फाउंडेशन में बहुत बहुत अटेम्प्ट्स लेते हैं बट दे क्लियर देयर इंटर एंड फाइनल इन द वेरी फर्स्ट गो. एंड इफ़ यू आर फीलिंग द गिल्ट कि मेरा अटेम्प्ट लग जाएगा या मैंने इतना अच्छे से प्रिपेयर किया था फिर भी मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, maybe there are some mistakes that you are doing again and again. Maybe there are some things that you are not prioritizing, the subject, the topics that you are not prioritizing. Maybe you need a new experience कि failure से कैसे deal करते हैं. And with that experience, I know you are going to clear your inter and your final in the very first go. And you will pass your May 2026. I know it. But this is a lifelong lesson that life is teaching you कि failure से कैसे deal करना है. Now comes the next thing कि ठीक है तुम्हारा 1 हफ्ते का रेस्ट वगैरह हो गया, अब तुम्हें कैसे शुरू करना है और कहाँ से शुरू करना है. Start
by revising the question papers of your January 2026. ठीक है, अपने क्वेश्चन पेपर उठाओ, रीड इट अगेन एंड अगेन, फाइंड आउट योर ओन मिस्टेक्स, एंड उसके बाद जिस सब्जेक्ट में, टेक ऑल द क्वेश्चन पेपर्स, सारे क्वेश्चन पेपर्स को गो थ्रू करो, जिस सब्जेक्ट में आपने सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स करी हैं उसको सबसे पहले उठाओ और उसको सबसे पहले कंप्लीट करो। ठीक है, जो टॉपिक्स आपने पहले छोड़े थे, जिनमें आपको ऐसा लगा कि उन टॉपिक्स में से बहुत ज़्यादा आया हुआ है, वो आपने पहले छोड़ दिए, उनको दोबारा करो। मैंने जैसे नोटिस किया, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देयर इज़ अ चैप्टर मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस एंड मेनी स्टूडेंट्स लीव दैट टॉपिक, एंड उसके बाद पेपर में सबसे ज़्यादा मार्क्स का वही आता है। सो इफ यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम जिसने वो छोड़ दिया है, आई विल रिकमेंड यू टू गो बैक एंड लर्न एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच। ठीक है, अब तुमने एक बार अटेम्प्ट दे दिया, यू हैव ऑलरेडी द आइडिया कि बेसिक रिवीजन कैसे करनी है, बट आई विल स्टिल रिकमेंड यू टू डू एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, कि मतलब तुम्हें पहले से पता है कि इस चैप्टर में, इस टॉपिक में ये चीज़ है, बट स्टिल तुम्हें कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है दोबारा रिवीजन करते हुए। फॉर एग्जाम्पल, तुम ऐसे बोलो कि मैथ्स मैंने पहले भी पढ़ा था, पहले भी मैंने किया था थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन या इंडेक्स नंबर, मैं अब जब दोबारा अपने मई 26 के लिए रिवाइज़ करूँगी या करूँगा, तो मैं नहीं करूँगी वो चैप्टर या नहीं करूँगा वो चैप्टर, ऐसा नहीं करना है। दैट इज़ द रीज़न व्हाई आई एम मेंशनिंग कि लर्न फ्रॉम स्क्रैच, दैट यू हैव टू डू एवरी टॉपिक, अ, एवरी चैप्टर, एवरी टॉपिक दैट यू डिड अर्लियर, तो तुम्हें वो करना है दोबारा सारा कुछ रिवाइज़, एंड दिस अप्लाइज़ टू ऑल द 4 सब्जेक्ट्स। स्टार्ट विद द सब्जेक्ट जिसमें तुमने क्वेश्चन पेपर में जान 2026 के क्वेश्चन पेपर में सबसे ज़्यादा गलतियाँ करी हैं, उस सब्जेक्ट से शुरू करो, एंड दैट एंड अप ऑन द सब्जेक्ट जिसमें तुमने पहले अच्छा खासा तुम्हें लग रहा है कि स्कोर किया हुआ है, एंड विच इज़ आई नो मैक्सिमम इज़ इकोनॉमिक्स। मैक्सिमम बच्चों ने इकोनॉमिक्स में सबसे अच्छा स्कोर किया होता था। आई वुड रिकमेंड कि डू दैट इन लास्ट, क्योंकि वो तुम्हारा ऑलरेडी अच्छा है। ठीक है, दैट्स हाउ द कैटेगरी 2 पीपल, यानी कि जिनको ऐसा है कि they are sure about the fact that they will not pass their Jan 2026, that's how you have to deal with your May 2026. And I know this fact that you will pass your May 2026. I know it. All the best. Now comes the category number 3, which is doubtful. Ki will you pass your January 2026 or you won't pass your January 2026? Let me tell you, when I gave my September 2025, I only had 40 to 45% hope that I will pass my September 2025, and the rest of it was the God's plan. It was मिराकल कह लो, मैंने हार्ड वर्क करा था बट मैं खुद को बहुत सेल्फ क्रिटिसाइज़ करती हूँ, ये कह लो, व्हाटएवर यू वुड लाइक टू से यू कैन कॉल इट। एंड लेट मी टेल यू, I passed quantitative aptitude on just the exact number. I got 40 in QA in my September 2025, and that was not less than a miracle. And this can also happen in your case. Maybe at this point you are doubting yourself कि पता नहीं पास होगा नहीं होगा, पता नहीं कहीं May 2026 ना देना पड़ जाए. So let me tell you, miracles happen. It happened in my case and it can happen in your case too. So better than stressing yourself out or going into depression कि पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, I think you should leave everything on God. And I know it, all of you who appeared for Jan 2026 will surely message me out and tell me or comment me कि हमारा clear हो गया. I know it already. And you will also cry the tears of joy that I did in my September 2025. एंड फॉर यू पीपल जिनकी कैटेगरी 3 है, जिनको ये नहीं पता कि हम पास होंगे नहीं होंगे, and most of the students come in this category because rare people are sure that they will pass and many people already know that they will fail, but almost 75% जिन्होंने बच्चे का पेपर दिया होता है, they come in the doubt category कि पता नहीं पास होंगे पता नहीं होंगे. I was also one of them. Here's the thing that you have to do. You have to also take a 1 week break, okay? You have to also take care of your health, mind, and body. And by that, I don't mean go and scroll mindlessly on social media. By that, I mean go for a walk, take good care of your health, maybe start working out or whatever you feel good. एंड ठीक है, हमने ब्रेक ले ली, हम अपनी हेल्थ का भी ध्यान रख रहे हैं, बट अब हम क्या करें? सो नाउ यू हैव टू डू इज स्टार्ट सर्चिंग फॉर लिटिल बिट फॉर सीए इंटर. ठीक है, योर मेजर फोकस शुड बी सीए फाउंडेशन, बट स्टार्ट बिट सर्चिंग फॉर सीए इंटर.
अब हम ये कैसे करें? सबसे पहले क्या करना है, डेली 2 से 3 घंटे अच्छा खासा ब्रेक लेने के बाद 2 से 3 घंटे, ज़्यादा नहीं, बिकॉज़ 2-3 आवर्स इन अ डे इज़ वेरी मिनिमम फॉर अ सीए स्टूडेंट। ईज़िली निकाल सकते हैं हम लोग, राइट? सो 2-3 घंटे आपको अपने जो सब्जेक्ट आपका सबसे वीक था अकाउंट्स में, सॉरी सीए फाउंडेशन में, जो सब्जेक्ट आपका सबसे वीक था, उस सब्जेक्ट में आपको जो-जो टॉपिक्स तब आपको अच्छे नहीं लगते थे, समझ नहीं आते थे, try recalling them. I'm not saying revise them. I'm saying recalling them. Recall all the subjects, recall all the topics. Just take 2-3 hours out of your day till your result comes out. ठीक है? इससे क्या होगा? You are connected with your CA foundation. So even if by 0.01% chance, even if you still lose your Jan 26 attempt, you are still connected with your syllabus. बिकॉज़ सबसे बड़ी गलती जो होती है यहाँ पे, द स्टूडेंट्स दैट डू इज़ कि वो टच ही छोड़ देते हैं अपने सिलेबस के साथ। वाज़ फॉर सीए फाउंडेशन, राइट? एंड नाउ कम्स फॉर सीए इंटर, ठीक है? सीए इंटर के लिए आपको क्या करना है? सो you will pass, right? That I know, ठीक है? You will pass your Jan 2026. We are revising foundation so that you do not lose the subjects or the topics that you have in your brain, कि आप उनके साथ एक in touch में रहो. And for CA Inter, you have to do is start searching. Don't get sure of your decision कि मैं यहीं से कोचिंग लूँगी या लूँगा, या मैं तो इंटर में जा ही रही हूँ, ये वो. Do not get oversure of anything currently, but start researching a little bit कि सी इंटर के सब्जेक्ट्स कैसे हैं, कौन-कौन सी टीचर्स पढ़ाती हैं, या हम कहाँ-कहाँ से हम कोचिंग ले सकते हैं, ऑनलाइन लेनी है, ऑफलाइन लेनी है, कैसे करना है. डू नॉट ओवर प्लान, ओवरथिंक, ओवर अस्यूम, बिकॉज़ एंड में जाके अगर रिजल्ट कुछ और निकला, सो दैट वुड हर्ट यू अ लॉट, इट वुड पुट यू इन स्ट्रेस, इट वुड पुट यू इन डिप्रेशन, इट विल गिव यू एंग्जायटी. ठीक है? तो डू नॉट गेट ओवर श्योर ऑफ एनीथिंग, बट सर्च अ लिटिल बिट, कि तुम थोड़ी-थोड़ी नॉलेज रख लो कि सिर्फ़ इतनी कि कितने सब्जेक्ट हैं, कौन-कौन से सब्जेक्ट हैं, उन सब्जेक्ट्स में क्या-क्या हम पढ़ने वाले हैं, लिटिल बिट, इतना-इतना तुम्हें सी इंटर का पता होना चाहिए, बस, ठीक है? मेक श्योर यू गेट कनेक्टेड विद योर सीए फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स एंड रिसर्च अ लिटिल बिट अबाउट योर सीए इंटर के सब्जेक्ट्स. दैट्स इनफ. This was for the category number 3, and here comes the bonus point for all the 3 category के बच्चे, ठीक है? Get connected with yourself, try new hobbies, get back to your old hobbies. किसी को पेंटिंग, ड्राइंग, डांसिंग, प्लेइंग क्रिकेट, वॉलीबॉल, व्हाटएवर, जो भी आपको पसंद था, जो छूट गया सीए की स्टडीज़ की वजह से, गेट बैक विद इट. बिकॉज़ आपकी उन हॉबीज़, आपकी उन जो भी छोटी-छोटी चीज़ें आपको करना पसंद था, कईयों को गार्डनिंग पसंद होती है, कईयों को कुकिंग पसंद होती है, व्हाटएवर यू लाइक्ड, that was back end, because of the CA exams, because of the CA studies, get back with it. Start doing all that stuff again. क्योंकि अब पढ़ाई पे तो इतना टाइम नहीं लगने वाला. This is the time when you'll be waiting for your result. So it's better to connect with yourself. It's better to get connected with your own body, with your own self, with your younger child. You can go to gym, but if you don't want to go to gym, you can exercise. If you don't want to exercise, walk every day for minimum 30 minutes, because I know it, हमारी सीए स्टूडेंट्स की हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, बिकॉज़ व्हाट वी फील लाइक कि अगर हम अब थोड़ा-सा टाइम जिम में या एक्सरसाइज़ में या वॉक में लगा रहे हैं, तो इट्स अ वेस्ट. हमें ऐसा लगता है कि वो वेस्ट है, हम उस टाइम पे पढ़ाई कर सकते हैं, एंड हम बहुत सैक्रिफाइस करते हैं. मैंने भी करा है. आई यूज्ड टू सिट ऑन वन टेबल, वन चेयर, वन टेबल फॉर ऑलमोस्ट, एंड आई डोंट नो हाउ मेनी आवर्स, कितने-कितने घंटे मैं एक ही जगह बैठी रहती थी. आई नो इट. एंड इस वजह से हमारी हेल्थ बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, एंड दिस इज़ अ टाइम व्हेन यू शुड गेट बैक विद योर हेल्थ, बिकॉज़ एंड में जाके यू डोंट नो व्हाट द रिज़ल्ट विल बी. तुम्हें नहीं पता रिज़ल्ट तुम्हारे फ़ेवर में होगा, तुम्हें नहीं पता रिज़ल्ट तुम्हारे अगेंस्ट होगा. Because if the result gets in your favor, your health will still suffer because you will enter into CA Inter. And if the results are not in your favor, your health will still suffer because you have to start all your revision from scratch. So, in both the cases, your health is going to suffer. So, it's better to take care of yourself now rather than waiting for later. And that's it. One thing that I would like to tell to all of the people जिन्होंने अभी अभी अपना सीए फाउंडेशन दिया है,
Do not stress yourself. बहुत सोच लिया. I know you are calculating your marks again and again. I know you are checking your question paper again and again. इतने नंबर तो पक्का है, इतने नंबर तो आ ही जाएँगे, इतने का अटेम्प्ट करके आई हूँ, इतने तो इंस्टीट्यूट दे ही देगा. This is what we think, and this is what I used to think. And none of this is going to benefit you. None of this. You're going to overthink it. जो भी रिजल्ट आना है, रिजल्ट वही आना है. You cannot change the result. You have given your exams. The only thing that you were able to do is give exams. You cannot make the result, you cannot change the result. You can only accept the result. And it's better not to calculate your marks. Recheck your question papers again and again. Stop it. Don't check your question papers again and again. They're going to bring you stress until and unless you know that you're not going to pass in your CA foundation. If you know it, then it's okay. But if you are doubtful whether you will pass, whether you will not, stop calculating your marks. Don't do it. And that's it. That's what I would like to share to all the beautiful people जिन्होंने अभी अभी अपना CA फाउंडेशन का पेपर दिया है Jan 26 में. And I can't wait to see you all in CA Inter. Also give me tips. I will also share you some tips. I'm a CA Inter student. मैंने अपना September 2025 क्लियर किया था. And I know 14% रिजल्ट था September 2025 में. It was barely 14%. It was 13 point some करके percent थे, round off to 14%. And I know I cleared in it. It was a very big feeling. And हर बार इतना ही रिजल्ट निकालता है इंस्टीट्यूट हमारा, हमें पता ही है. So जब आप अपना पहला प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर करते हो ना, तो the feeling cannot be put it into words. And you will also clear your first professional exam. I know it. And one thing I would like to tell you, ki if you have any tips, anything you would like to share with me, comment down below. And till then, take care. Bye bye.